अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड वीलॉगिंग की क्विज़ नंबर 4 करेंगे, जो इस बैच की आखिरी क्विज़ है, जिसकी ड्यू डेट 14 जनवरी है। ये आपके सामने मैंने जो क्वेश्चन हैं उनको टाइप करके रखा हुआ है और इनके हम बारी बारी इनके जो आंसर हैं उनको हम हाईलाइट करते जाएंगे। मीनवाइल फ़ाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगा। और आपसे भी एक गुजारिश है कि अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कमेंसिंग ऑनलाइन वर्क इंक्लूड ए कंप्यूटर, रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, ऑल ऑफ द गिवन। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट विच फेज इज़ आफ्टर इफेक्ट कॉमनली यूज्ड? प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बोथ, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो दोनों के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टूल इज़ यूज टू deform a part of an image video according to the position of pins? Puppet tool, clone stem tool, eraser tool और रोटो ब्रश टूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन एंकर पॉइंट? Anchor point, the absolute position of a layer, the point on the timeline that sets automation, a save restore point in the undo history, the pivot point for transformation to a layer। तो लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। नहीं, लास्ट वाला ये है, द पॉइंट ऑन द टाइमलाइन। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल ये हमारा ये है सेकंड वाला। तो यही इसका करेक्ट सिस्टम में कोई मसला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडजस्टिंग ओबेसिटी? Modify audio level, change font style, adjust the transparency of a layer, crop images। तो इसका थर्ड वाला है, adjust transparency of a layer। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जी। Why do we use templates in Adobe Premiere Pro to effortless boost your video project? यही इसका करेक्ट आंसर है जी, to change the color। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हैंड टूल इन द टूल पैनल ऑफ आफ्टर इफेक्ट? टू ड्रा पाथ एंड शेप्स, टू एडजस्ट एंकर पॉइंट एंड मास्क्स, टू मूव द कंपोजिशन व्यू विद इन द व्यू पोर्ट, टू क्रिएट एंड मॉडिफाई टेक्स्ट लेयर। तो 7 नंबर में हमारा जो है वो टू मूव द कंपोजिशन ये आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आफ्टर इफेक्ट? मोशन ग्राफिक एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दी। तो पहला इसका करेक्ट आंसर है। हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑप्शन अलाउ यू टू स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन फोल्डर एंड फाइल नेम व्हेन एक्सपोर्टिंग मीडिया इन प्रीमियर प्रो? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आउटपुट नेम, एक्सपोर्ट लोकेशन, सेव एज, एक्सपोर्ट पाथ।
तो ये आखिरी वाला एक्सपोर्ट पाथ हमने देना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच शेप कैन यू क्रिएट बाय यूजिंग ए शेप टूल? रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, ऑल ऑफ द गिवन। तो ऑल ऑफ द गिवन होगा। एक क्वेश्चन जो हमारा था 4 नंबर डाउटफुल था, उसको हम रीचेक कर लेते हैं और आप ये तरीका भी देख लें। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको चैट जीपीटी जो हमारी है ब्राउज़र है विंडो के साथ, जो एज का ब्राउज़र है, उसमें हम देख लेते हैं इसको। सिस्टम में कुछ स्लो हो गया है, काम कर करके ये भी थक गया है मेरी तरफ। आओ जा भाई। ये आप देख लें, यहाँ आपने को पायलट पे जाना है और इस पे क्लिक करना है और अपना जो क्वेश्चन है उसको टाइप करना है और इसके बाद ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। कंट्रोल वी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? शॉर्ट आंसर चाहिए, इस पे क्लिक करें जनरेट ड्राफ्ट पे। तो ये अपने जो इसके पास डेटा पड़ा हुआ है वहाँ से ये सॉर्ट आउट करके इसका आंसर हमें दिखा देगा। एनी रिंकल पॉइंट दैट द डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्ट लीगल। तो ये तरीका भी है और दूसरा जो क्रोम के साथ वाला है वो भी है। तो इसको हम कॉपी करके देख लेते हैं कि हमें आंसर इसका मिला है कि नहीं। इसको कंट्रोल एंड कंट्रोल वी, general it is point to define something for animation in anchor point is absolute position of a layer on the screen. It is also pivot point for transmission. ठीक है जी, ये हमारा आ गया ना पिवट पॉइंट। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।